Assalamu alaikum, everyone. Today we have Fatima Khan with us, who is a postgraduate from Bristol University, England, and she has tons of teaching experience and working in education sector of Pakistan. She has diverse background, and like myself, she has double masters in different fields, and like she has done tons of research in those areas. And like once you do the research, of course, हमें एक्सपोजर करने का मौका मिलता है और हम सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में. Her research is about education policy and her research is about minority rights in education sector in Pakistan, or she can correct me if I'm wrong. I will allow you, Fatima, now to begin. Like, you can please begin with your introduction and correct me if I said anything wrong, and we can move on with the session. Sorry. Can you unmute now? Yeah. Okay, sorry. Thank you. No problems at all. That's the Zoom life. Hi, everyone. So my name is Fatima. I am Education Policy and International Development's Commonwealth Scholar from the University of Bristol, UK. Lalo did a really good introduction and introduced the main parts of my research. But मेरा कुछ काम climate change education में भी है, which I was doing with Dr. Kerry Facer and Dr. Alison Oldfield at the University of Bristol. I was also working as a climate change ambassador at the university. Plus, I was also sort of an RA with Dr. Kerry Facer in her field, which was basically decolonization of climate change education, and sort of looking at reimagining futures. अपना जो मेरा काम था वो basically tha how we can look at decolonizing water resources, and basically how we look at water related problems in South Asia. And that was basically a small part of what Dr. Kerry Facer was doing as part of her own research. So I was basically her research assistant. Fatima, number one, पहले तो let's try Urdu. और दूसरी बात, like जो भी आप बातें कर रही हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देते जाएं, because like consider के even मुझे भी शायद चीजों का नहीं पता. And sorry, the third thing, मुझे लग रहा है कि आप बहुत तेज बात कर रही हैं. That is something that yeah, so like थोड़ा आराम से, कोई जल्दी नहीं है. ठीक है. सो जो मेरा डीकोलोनाइजिंग वाटर वाला काम था, उसके ऊपर क्या कहते हैं, बेसिकली जो मैं उनके साथ काम कर रही थी, दैट वाज अबाउट हाउ हम लोग पानी की जो रिसोर्सेज हैं उनको हम एक बहुत सॉर्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी की किल्लत की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो हम उसको इस तरह देख रहे हैं कि अच्छा उसका सोल्यूशन क्या है. उसका सोल्यूशन है फॉर एग्जांपल डैम बनाना, ठीक है. बट जो उनकी रिसर्च थी, दैट वाज बेसिकली अबाउट कि हम किस तरह उसको लोकल और इंडिजिनस सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, जो इंडस रिवर बेसिन है, जो फॉर एग्जांपल ये रिवर इंडस का एरिया है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो इनिशियली एक क्या कहते हैं बैरन जगह थी सॉर्ट ऑफ, और क्या कहते हैं उसको आर्टिफिशियली डैम्स के थ्रू इरिगेट करके एक एग्रीकल्चरल एरिया बनाया है, ठीक है. मैं इसको बहुत रूडिमेंट्री अल्फाज में बता रही हूँ. ऑब्वियसली मेरी बैकग्राउंड साइंस नहीं है, मेरी बैकग्राउंड CCE है, क्लाइमेट चेंज एजुकेशन है. सो क्या कहते हैं, फॉरगिव मी इफ आई मेस अप द साइंस, बट बेसिकली द आइडिया इज कि अगर आप क्या कहते हैं मॉडर्न साइंटिफिक सॉल्यूशंस के बाहर देख के अगर आप इंडिजिनस सॉल्यूशंस की तरफ देखना शुरू करो, या जो लोकल सॉल्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर सदियों से हो रहे हैं, साल से हो रहे हैं, ठीक है, जिनको अब हमने मोस्टली पीछे छोड़ दिया हुआ है, ठीक है. अगर हम उन चीजों को अब वापस उन चीजों की तरफ जाएं, और अगर क्या कहते हैं हम क्लाइमेट चेंज को इंडिजिनस लेंस से देखना चाहिए, लोकल कम्युनिटीज के लेंस से देखना शुरू करें, लोकल कम्युनिटीज की जो चीजें हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं फोरफ्रंट पे लाके क्लाइमेट अडेप्टेशन और क्लाइमेट मिटिगेशन की चीजों के ऊपर लाएं, तो हम उसको किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको किस तरह यूज कर सकते हैं
एक तो ये चीज। दूसरा जो चीज थी जो मैं यूज कर बेसिकली जिसका मैं पार्ट थी ब्रिस्टल के अंदर, दैट वाज क्या कहते हैं, फोक टेल्स एंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, सो स्टोरी टेलिंग और फोक टेल्स पाकिस्तान में बहुत साल से हैं। आई थिंक हम सभी क्या कहते हैं, जब बचपन में हम सब ने सुनी होंगी। सो उन सब फोक टेल्स की, पर्टिकुलरली जो रिवर इंडस के अलोंग फोक टेल्स हैं, उन फोक टेल्स की बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आप जो कम्युनिटीज ने एज वार्निंग मेथड्स यूज किए हैं ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरीज। ठीक है, जिस तरह मैं अभी शुरू होने से पहले लाल को एक बहुत इंटरेस्टिंग फोक टेल के बारे में बताई थी, जो विच केम अप जब मैं रिसर्च करी थी वहां पे। सो मैं उसकी एक बहुत बेसिक सी और क्विक सी मैं आपको उसकी जस्ट बता देती हूँ। सो बेसिकली द आइडिया वाज कि रिवर इंडस के जो फॉर एग्जांपल स्टोन्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या कहते हैं, रिवर के एग्स हैं या बेबीज हैं बेसिकली रिवर के। ठीक है, और जहां जहां पे आपको वो जो है रिवर के बेबीज दिख रहे हैं, जो बेसिकली आपको रिवर के बेबीज दिख रहे हैं, आपने वहां पर जाके पॉपुलेट नहीं करना। ठीक है, आपने वहां पे जाके पॉपुलेट नहीं करना, क्योंकि इनएविटेबली क्या होगा कि रिवर जो है अपने बच्चों को रिक्लेम करने आएगा। ठीक है, सो दैट इज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोक टेल, जिससे आपको पता चलता है कि आपने रिवर के रिवर के बैंक्स के अलोंग जो है आपने वो नहीं बनानी है। रिवर के बैंक्स के अलोंग फॉर एग्जांपल आपने अपने घर नहीं बनाने। ठीक है, बिकॉज रिवर ने ऑब्वियसली यहाँ पे आके एट वन पॉइंट और अनदर अपनी टेरिटरी रिक्लेम करनी है। ठीक है, सो इस तरह की और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं फोक टेल्स वगैरह है, particularly in the Indus region. ठीक है, so this was one thing that I was working on, and probably I will continue working on this with her remotely. So yeah, plus इस क्या कहते हैं, plus बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं जो आई थिंक अज़ल ने अभी शेयर किया है, दैट क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हैं, which is really interesting. They are such amazing क्या कहते हैं स्टोरीज हैं, लेकिन ज्यादातर आई बिलीव ओरल है. आई हैव नॉट come across a compilation that can be used that can be used in climate change education, or that can be used in schools. Maybe I'm wrong, correct me if I'm wrong. शायद हो compilations हो, but mainstream पे at least जब मैं अपनी research करी थी, I wasn't able to access them. If someone has अगर कोई access या कोई link हो तो जरूर share करें. I would love to have like a more detailed look at them. So yeah, so दो चीजें जिसके ऊपर मैं काम कर रही थी ये थी. And yeah, um anything else, Laura, that you would like me to add? Yeah, so thanks for sharing that story. That was really interesting to me. और मैंने as we discussed कुछ दिन पहले ही ये नजरिया सुना था, and it was like really interesting. मतलब हम कभी कभी इन चीजों के बारे में इस तरीके से नहीं सोचते. Can you tell more about like your research, जो कि आपने minority rights की बात की कि what was your research project, and what like was it more inclined towards what's happening in Pakistan, or it was general? Okay, so जो मेरी research थी minority rights के ऊपर in Pakistan, it was specifically in the context of Pakistan. और क्या कहते हैं, basically it was about the radicalization which happens in our curriculum. ठीक है, so my project basically centered around Pakistan history and how Pakistan history, for example, अगर आप पाकिस्तान हिस्ट्री को देखें, अगर आप कोई भी किताब उठा के देखें, particularly जो हमारी मैट्रिक और इंटर की किताबें होती हैं, अगर आप उनको खोल कर देखें तो वो ज्यादातर होती हैं एक रिलीजियस लेंस से लिखी होंगी rather than the lens of historical fact. अगर आप उसके अंदर देखें खोल के तो आप बहुत एक अस हम मुसलमान वाली चीज प्लस क्या के और अगेंस्ट इट्स गोइंग टू बी अगेंस्ट एनीवन हु इज अ नॉन मुस्लिम एसेंशियली. ठीक है, सो माय रिसर्च बेसिकली ज्यादातर जो मेरी रिसर्च देख रही थी कि जब हम लोग इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं हिस्ट्री पढ़ाने के ऊपर, जब हम लोग क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ टेलिंग नहीं इस्तेमाल करते, ज्यादातर ट्रूथ टेलिंग नहीं इस्तेमाल करते अपनी हिस्ट्री के अंदर, तो उससे बच्चों के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं. ठीक है, सो Can you हाउ can you give an example? ओके, सो बेसिकली अगर मैं एक इवेंट उठा के देख लेती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बांग्लादेश वॉर के बारे में देखते हैं, ठीक है, 1971 की वॉर के बारे में हम अगर देखें, ठीक है,
तो 1971 की वॉर के अंदर ऑब्वियसली जब जंग होती है तो जंग के अंदर किसी एक पार्टी की गलती तो नहीं होती ना, ठीक है। बट अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें कि हमारी पर्टिकुलरली हिस्ट्री की किताबें हैं तो उसके अंदर स्क्वेयरली जो फॉर एग्जांपल बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाला जाता है बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है। दूसरा डाला जाता है इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने फसाद क्रिएट किया। और अगर आप लैंग्वेज उसके अंदर देखें, सेमियोटिक्स देखें, अगर आप उसके अंदर लैंग्वेज देखें तो वो लैंग्वेज बहुत ही डेरिगेटरी है। दूसरी बात है बहुत जो है सेकेंडली बहुत इंसाइट करने वाली लैंग्वेज है, लाइक दैट लैंग्वेज डज नॉट वांट एनीवन टू अंडरस्टैंड लाइक द events that happened or the lead up to the events। और बेसिकली वो लैंग्वेज ये भी समझ आपको समझाना नहीं चाहती है कि अगर ये जंग हुई थी तो जंग के अंदर हर एक की गलतियां होती हैं, ठीक है। सो वन साइडेड लेंस होगा, ठीक है। बट वन साइडेड लेंस के अलावा क्या कहते हैं और भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। सो बेसिकली माय रिसर्च वाज यू नो based on that। It was a discourse analysis of the textbooks that are taught in public schools in Pakistan, particularly जो इंटर और मैट्रिक के अंदर पढ़ाई जाती I kind of couldn't gather ki, I mean, there were different aspects, but still I was trying to understand minority rights. We talked a है। या lot माइनॉरिटी and राइट, ओके, बिकॉज माइनॉरिटी जब आप पर्टिकुलरली उठा के किताब को देखते हो तो हम ब्लेम पर्टिकुलरली हिंदूज के ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है। और okay, हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत साइजेबल हिंदू माइनॉरिटी है, ठीक है। सो okay, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? जब आप हिंदूज को ब्लेम करना शुरू करते हो तो क्या कहते हैं आप ब्लेम करते हो हिंदू इक्वल्स टू इंडिया, yeah, या ठीक है। तो yeah. हम भूल जाते हैं कि क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर एक बहुत साइजेबल हिंदू माइनॉरिटी है। और जब आपके बच्चे बाय एंड लार्ज स्टूडेंट्स जो हैं ये किताबें स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका उन माइनॉरिटीज के साथ क्या बिहेवियर होगा। And how does climate change come into all of it? सो क्लाइमेट चेंज वाज जस्ट समथिंग दैट आई वाज डूइंग एज एन आरए, ठीक है। बट Okay, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इसके अंदर बहुत हेविली इस तरह फैक्टर किया होता है क्योंकि अगर आप क्लाइमेट चेंज के अंदर देखो तो सबसे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती हैं वो आपकी मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन होती हैं, okay. ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध के अंदर देखो तो क्या कहते हैं जो अभी फ्लड्स के बाद डिस्ट्रक्शन आई है, सो इट्स वेरी हार्ड टू गेट यू नो इट्स वेरी वेरी हार्ड टू गेट जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के एरियाज हैं, वहां तक जस्टिस पहुंचाना, वहां तक रिसोर्सेज पहुंचाना, वहां पे रिबिल्ड करना सबसे मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि उनकी Um, कम्युनिटीज पीछे रह जाती हैं हिस्टोरिकली। yeah. दैट इज हाउ सिस्टमिक इनजस्टिस वर्क्स। Yeah, well, that's one way of looking at it. Um, can you tell more about the module that you discussed about the climate change and decolonization? And Yes. like at the beginning, you introduced that you were interested into water aspects or किस तरीके से पाकिस्तान का water system काम करता है. And like this is a huge debate again. Yeah. Like even I want to correct myself as well. क्योंकि what happened last year in Pakistan. Well, this is whole another debate. Was it was the reason A, B, or C? I'm so afraid even to name it. But like, of course, as per my understanding, I'm an engineer. From my little understanding of climate action, well, partially there were system failures, but then of course those kind of rains we have never seen in Yeah. Pakistan before that. So like, can you please highlight on your experience in decolonization and climate change? या सो डीकोलोनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज, एक तो जिस टाइम हम लोग बात कर रहे थे शुरू के अंदर बिफोर आई थिंक द वेबिनार स्टार्टेड वाज के बेसिकली हम लोग बहुत ज्यादा जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर देखते हैं सो वी लुक एट डैमिंग एज अ सोल्यूशन। सो बेसिकली जो मेरी रिसर्च थी कि अगर हम लोग क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम किताबों को लिख रहे हैं, ठीक है, तो किताबों में अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज के बजाय जो कि बहुत ज्यादा ग्लोबल नॉर्म्स के मेथड्स को देखना चाहती है, ठीक है, या बेसिकली सिर्फ ग्लोबल नॉर्म्स की नॉलेज को वैलिड कंसिडर करती है, अगर हम उन चीजों के बजाय देखना शुरू कर दें बेसिकली उन चीजों को फॉर एग्जाम्पल जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज है, ठीक है, हम उन अगर इंडिजिनस नॉलेज के फैक्टर्स को आगे लाना शुरू कर जाएं बिकॉज एज अज़ल इज सेइंग वन साइज डज नॉट फिट ऑल, क्या कहते हैं हमारी सारी चीजें क्या कहते हैं हम लोग वो सॉल्यूशंस जब तक अपने मुल्क के अंदर कंटेक्चुअलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो चीजें फिक्स नहीं हो सकती। एक तो बात ये हो गई।
दूसरी बात ये है, फॉर एग्जांपल स्टोरी टेलिंग. one thing that is very heartbreaking to me is कि particularly जहाँ जहाँ climate change आ रहा है, वहाँ वहाँ पे जो क्या कहते हैं climate related migration होती है, तो वहाँ की जो indigenous languages होती हैं, वो indigenous languages मरती जाती हैं, because ultimately एक तो वहाँ के लोग climate disaster की वजह से migrate करें, then a large chunk of the community might be affected, that they might die. Like we lost so many lives in, for example, Pakistan last year. ठीक है, floods की वजह से. ठीक है, तो climate migration की वजह से जो है indigenous languages मरी हैं. So indigenous languages को revive करने का एक क्या तरीका है कि जो आपकी for example folk stories हैं, आप उनको क्या कहते हैं, rather than keeping them as oral records, आप उनको क्या कहते हैं, चलो अगर आपने ट्रांसलेट करनी है मेन स्ट्रीम के लिए, आप ट्रांसलेट कर लो, बट कीप देम इन अ रिटन रिकॉर्ड. ठीक है, सो दैट दे आर प्रिजर्व्ड. ठीक है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ इट्स नॉट फूड इनसिक्योरिटी दैट इज हैपनिंग. ठीक है, देयर इज नॉट जस्ट migration that's happening. There are also things that are happening on the social scale. So for example, क्या कहते हैं, languages आपकी lose हो रही हैं, आपका indigenous art खत्म हो रहा है. ठीक है, सो बेसिकली क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, इन सारी चीजों को सॉर्ट ऑफ रिवाइव करने के लिए, इन सारी चीजों को सेव करने के लिए यूज हो सकती है. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज लुकिंग ऑन इन ब्रिस्टल. ठीक है, सिमिलरली क्या कहते हैं, आई बिलीव WWF की कुछ चीजें हैं, but I think उनका जो ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम है, it's actually not related to this, but I think WWF जो है अब थोड़ी बहुत अपनी स्टोरी टेलिंग जो है वाली जो चीज है, वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने बिल्डअप करना शुरू करनी है, कर रहे हैं. आई थिंक आई सॉ समथिंग ऑन वन ऑफ देयर पेजेस not too long ago, but yeah, that is something that needs to be done, that needs to be brought to the forefront, कि आप किस तरह क्या कहते हैं लैंग्वेजेस को, किस तरह आर्ट को, इंडिजिनस आर्ट फॉर्म्स को एजुकेशन के थ्रू आप उनको रिवाइव करो, उनको सेव करो, बिकॉज हाउ डू यू सेव योर कल्चर. एसेंशियली आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, आपकी फोक टेल्स खत्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. So these are some of the very important things that we should be talking about, and I feel like not enough institutions in Pakistan are doing a lot. I completely understand, like developing country के अंदर there isn't a lot of resources, so हमारी resources बहुत जो हैं आधा टाइम तो उसी के ऊपर लगी होती हैं कि लोगों को बचाने के ऊपर, but these aspects of culture really need to be looked at, to be saved. And yeah, there needs to be more work that needs to be done in Pakistan in order to save these things, because what are we if we completely lose our culture. Okay. So you've lived 1 year in UK. Yeah. So क्या आप हमारे ऑडियंस के साथ ये शेयर कर सकती हैं कि क्या फर्क है कि वो लोग किस तरीके से क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट डिजास्टर और क्लाइमेट फ्यूचर को देखते हैं, और हम एज यू मेंशन कि हम डेवलपिंग कंट्रीज में बैठ के अदर टाइम, तो व्हाट अदर टाइम, इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से तो हम सिर्फ अपने वी बिजी जस्ट टू मीट आवर एंड्स. सो क्लाइमेट कल्चर तो इवन बहुत दूर की बात है. Even to think about climate change or environment would be the last of the concerns. अभी कल ही पेट्रोल 26 रुपए बढ़ गया है. So we are just busy in that. But like क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम रिस्पेक्टिवली जो भी अपनी काम कर रहे हैं, like we all can contribute. So what's the main difference how we vision the future, because like climate change or actions is the future, and how do Western people envision that? Yeah, that's actually a very interesting question, because क्या कहते हैं, एक तो let's be honest, उनकी जो शहर बने होते हैं वो बहुत सस्टेनेबल तरीके से बने होते हैं. ठीक है, पाकिस्तान में everyone has a car. ठीक है, I think the need of the hour right now for our cities is कि public transport के अंदर क्या कहते हैं किया जाए.
इन्वेस्ट किया जाए, और हम rather than making roads and everything, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर करें, ताकि आपकी बेसिक, फॉर एग्जांपल जो स्मॉग के स्टार्ट्स आते हैं हर साल, वो ये होता है कि गाड़ियों की वजह से हो रही है, ठीक है। एंड I completely understand, because the sheer number of cars on the road in Lahore is just insane. इतनी ज्यादा गाड़ी है तो स्मोक तो होगी। मतलब यहाँ पे आई थिंक पिछले साल ब्रिस्टल में, आफ्टर 5 years, दिस इज अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस टू मी, 5 साल में पहली दफा था कि मुझे खांसी नहीं हुई। मुझे हर स्मॉग सीजन के अंदर क्या कहते हैं, एक इंसेन अमाउंट ऑफ खांसी और बेसिकली एस्थमा ट्रिगर होता है, which has happened for like at least 5 years now. ठीक है, so last year was the first year जो in a very long time which it didn't happen. So एक तो obviously उनकी cities क्या कहते हैं बनी इस तरह हुई हैं कि लोग या चल रहे होंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे होंगे, वहां पे गाड़ी रखना एक्चुअली टेक्निकली ज्यादा एक्सपेंसिव है। But I mean, I live in kind of like Ireland, so it's similar to what UK, even like much like UK is much more Developed in one. developed than Ireland. Yeah. Like in Ireland as well, I mean, when we walk around, we see 3 or 4 cars parked in one house. So पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे एक That घर में is ही very गाड़ी। odd because एक घर में 4 गाड़ियां होती हैं for sure, but honestly that is not my experience in the UK. Yeah, I but saw very few people, yeah, in the UK with, a car. Like, my professor, he was the head of the department for the School of Education in the University of Bristol, which is like a top 100 university. वो cycle चला के आते थे. same here. Yeah. Yeah. But yeah, and then general deforestation, like the way they have, kept their, trees, their flora and fauna. But obviously जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, आई नो ये बहुत दिस इज समथिंग दैट इज रेगुलर सोशल मीडिया डिस्कोर्स आजकल, लेकिन जब हम इवन मैं if Lahore had a very very safe public transport system, I would, as a woman, would be hesitant to use it, क्योंकि हमारी जो है स्पेसेस जो है वो औरतों के लिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सेफ नहीं, ठीक है। सो everything needs to the economic with the political to the social, everything needs to go hand in hand. अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इतना शऊर देना है अपनी पब्लिक को कि जो है ये जो सड़कें हैं यहाँ पे, अगर कोई औरत आपको बस में दिख रही है तो यू नीड टू मेक हर फील सेफ, राइट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तभी वाइडली यूज होगा जब आपकी आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन, जो फीमेल पॉपुलेशन, वो उसको इस्तेमाल करने में सेफ महसूस करेगी। Yeah, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा, you give really good examples from your personal experience, and of course the opinion can differ. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि from policy level या फिर बड़ी लेवल पे, on a national level, किस तरीके से सोचते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, और या फिर फॉर एग्जांपल हम मूवीज में देखते हैं कि किस तरीके का फ्यूचर वो लोग इन्विजन करते हैं, और पाकिस्तान में बैठ के, so do you have a rough idea of how people? Yeah, एक तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पे क्लाइमेट चेंज उस तरह हिट नहीं किया जिस तरह यहाँ पर किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, द टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी आर सीइंग, ठीक है, दे आर स्टिल वेरी फार from what, or I think the most recent thing that sort of which has sort of given them a wake up call is, for example, जो कैलिफोर्निया में wildfires हो रही हैं, या अभी recently यूरोप में हो रही थी, ठीक है। So that was a wake up call for them. Yeah, can everyone hear me? I think मेरा पास से तो unmute है. Yeah, I can hear you fine, so you can continue. okay, so it's probably, yeah, so एक तो उनके लिए it's obviously very very far for from the, because we're living it right now, right? ठीक है, उनके लिए अभी उस तरह हिट नहीं हुआ, बट क्या कहते हैं, also one really interesting thing that I felt that was happening over there was क्या कहते हैं, for example, there's this project by Utrecht University, Warwick, and I believe Durham. It's called the Museum of Carbon Ruins. Let me just quickly share the link over here. It might be very interesting. Feel free to share screen and just talk about examples. That would be interesting.
I have a very unstable internet connection, so मुझे screen share करने नहीं दे रहा for some odd reason. But let me just share the link in the chat. Yeah. So this was very interesting to me, and basically this sort of looks at, an alternate, version of things. So for example, the Museum of Carbon Ruins looks at कि basically आपने जो fossil fuel आप use कर रहे हो, ठीक है? So yeah, amazing. Thank you for sharing that, Lalo. No Yeah. problem. So basically, it's very interesting. They sort of what they do is they will show you a cell phone, and they'll be like, like 100 years ago, this was the sort of communication methods that people were using, and look at how outdated this is. And then what they'll do is they'll sort of show okay, this is the greener, more sustainable method that we have come up with now. Okay, and this is such an interesting exercise. We did like a mini version of this at a public school in Bristol, and it was absolutely so much fun to do with the kids. So the kids came up with so much interesting insights into आप किस तरह की different चीजें इस्तेमाल कर सकते हो in order to get rid of fossil fuels, in order to get rid of these things that are sort of जो आपकी दुनिया को खराब कर रही हैं. ठीक है, इन्होंने उनकी इतनी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव आइडियाज थे बच्चों के. Like obviously at this stage you can't really take those ideas and put them in somewhere, but basically it's a very interesting and very insightful Kickstarter activities for educators to use in classrooms, ताकि बच्चों को पता चले कि जो हमने कैपिटलिज्म ने सॉर्ट ऑफ ये डिसाइड कर लिया कि हम एक लैपटॉप और एक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन के बगैर जिंदगी नहीं बसर कर सकते. ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और की जा सकती हैं, and everyone has the means to come up with that for them. So that is a very, very interesting exercise for climate educators to use in the classroom. So yeah, it's very interesting how the way they look at it. How do you think in Pakistan we can bring up such activities and like to bring change, to change our mindsets? I mean, on the things that we spoke about at the beginning of this session, I mean, culture, art, those are still important and matter. लेकिन उससे मतलब उससे भी पहले हमें अपने एजुकेशन और छोटी लेवल तक, क्योंकि there was, I can vividly recall there were some chapters or some units in when I was in a school about environment, like cleanliness and those things. But that's all I can remember. I mean, so like मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ, so I mean maybe अगर मेरी स्कूलिंग के टाइम पे जब मैं स्कूलिंग में थी, अगर शायद दुनिया के वेस्टर्न वर्ल्ड में शायद उस टाइम भी क्लाइमेट चेंज और इन मसाइल के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है. Like in my until like मेरा first year inter, I don't remember anything listing about these concerns, neither in my school nor on like social media. तो खैर तब नहीं था, लेकिन टेलीविजन पे भी I don't remember anything. So like, what can we do to, like, what could be the good examples to bring in Pakistan? Okay, सबसे पहले I think बिल्कुल आप बात सही कर रहे हो. आई थिंक पाकिस्तान में जितनी भी अभी हम ज्यादातर देख रहे हैं ना चीजें क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो बड़ी साइंटिफिक लेंस से बात करते हैं. तो जिस तरह अब ये आर्ट, स्टोरी टेलिंग, ये बड़ी इंटीग्रेटिव बातें हैं. ये आप लिटरेचर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप आर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप सोशल स्टडीज में भी इस्तेमाल कर सकते हो, साइंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो. सो सबसे पहले तो जिस लेंस से हम क्लाइमेट चेंज एजुकेशन को व्यू कर रहे हैं ना, that needs to change. और वो साइंटिफिक लेंस से एक होलिस्टिक लेंस पे जाना चाहिए. बहुत इंटीग्रेटिव वर्ल्ड व्यू यूज करना चाहिए हमें उस चीज की. एक तो ये चीज हो गई. दूसरी बात, आई थिंक that is the starting point, and once we take it from there we can do a lot. We can like integrate it into different types of modules which can be so interesting. Not only वो
उन सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा एनरिचमेंट आएगी, बट उन सब्जेक्ट्स के अलावा क्या कहते हैं, आई थिंक हम एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा सकेंगे इफ वी स्टार्ट व्यूइंग क्लाइमेट चेंज टुवर्ड्स इन दैट लेंस, दैट इट्स नॉट जस्ट सिंपली साइंटिफिक, वो एक सिर्फ टनल विजन नहीं है, बट वो ज्यादा एक इंटीग्रेटिव चीज है। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और आई थिंक अब कुछ कुछ जगह पे ये आइडियाज आ रहे हैं, एंड आई होप के दे सॉर्ट ऑफ टेक सीड और वहां से बढ़े वो आइडियाज। सो या अब तो करना बहुत आसान है, आई थिंक इवन लाइक अगर एक स्कूल टीचर डिसाइड करे दैट दिस इज समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट, और मैं क्या कहते हैं ये करना चाहती हूँ, तो इंटरनेट पे रिसोर्स ही रिसोर्स है, फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगी। रिसर्च करना, आई थिंक everyone at this point understands how to do it, and there are so many resources that that can be shared with people, that can teach people how to do it. So बहुत ज्यादा स्कोप है इस चीज के लेकिन अंदर, और फातिमा पाकिस्तान के मैं yeah. जस्ट ये सोच रही थी बिकॉज आई बिलोंग टू खैबर सिंध, और हाँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ आई कैन नॉट इमेजिन, आई मीन दो मसले हैं, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज लेट्स से अभी हैं हमारे पास, वो करिकुलर स्टैंडर्ड सारी चीजें वो शायद आ भी गई हैं, लेकिन स्टिल अनकन्वेंशनल मेथड्स हमारे सिलेबस का पार्ट वो उस तरीके से अभी भी नहीं बन पाई। वी हैव अ नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक इन फैक्ट ऑन 22nd of September, जिसमें हम करिकुलर की बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में ये हो रहा है। लेकिन स्पीकिंग ऑफ रिसोर्सेज, आई डोंट मतलब वेयर फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि ना तो हमारे टीचर्स एज ह्यूमन रिसोर्सेज दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, एंड नीदर डू वी हैव, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट, मोबाइल और लैपटॉप और स्क्रीन, those are really rare. I mean, I have seen examples जहाँ पे पंखा भी नहीं है schools में. So because like मैं गवर्नमेंट लेवल की बात करी, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है that's the बिल्कुल syllabus. आप प्राइवेट में पढ़ाते हो, that's a different thing, and like this huge number of population that's going to government schools, and that the syllabus is replicated in private schools. तो जहाँ पे पंखे नहीं है वहाँ पे इंटरनेट और ये सारी चीजें तो बहुत दूर की बात है। तो करिकुलर इज समथिंग वेरी बेसिक, आई मीन जहाँ पे पंखे नहीं है वहां पे भी एटलीस्ट सिलेबस की बुक्स तो हैं। सो आई थिंक that's a really important point to be like changed, and that matters a lot. And like next yeah, week I have it I does, have a and I fellow from, understand the yeah. yeah, sorry, I was just introducing that. Next week we have a researcher from Cambridge University who would be talking about that, and like he's working on Pakistan's case study as well. Yeah. Yeah. So yeah, I understand your concern where it's coming from. But basically climate change education को implement करने के लिए you don't really need a lot of conventional things. आपको technically एक laptop वगैरह की जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम से क्या कहते हैं without any resources कर सकते हो. The issue that I completely understand is teacher training. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक बहुत ही कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग है जिसको क्या कहते हैं उन्होंने करना है. अब आई थिंक द मोस्ट द एनसीसी, द नेशनल करिकुलम काउंसिल हैज डन इज के उन्होंने एक एनवायरमेंटल मॉड्यूल डाल दिया है, बट दैट वंस अगेन इज वही जो किसी प्रिटी कहानी हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैस से होता है. वो तो हमने भी बचपन में पढ़ी थी. आई एम turned 32 recently. I mean, it hasn't done a lot of good, in terms of education. So yeah, one, I think this needs to be क्या कहते हैं जो क्लाइमेट चेंज एजुकेशन वाली चीज है उसके लिए प्रॉपरली वो टीचर्स की सीपीडी के अंदर इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव वो जो मेरी अपनी क्या कहते हैं डिसर्टेशन और रिसर्च है उससे भी रिलेटेड. बट आप टीचर को एक अमेजिंग जबरदस्त टूल बना के दे दोगे, जब तक टीचर को जो कि बेसिकली इज द पर्सन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ No, let me start the recording. Yeah. Oh, sure.
So I have my master's in environmental education from NYU. I have my own organization called Abadtak, which is entirely for environmental education. मैं अभी Beacon House के साथ group के साथ काम कर रही हूँ और I'm the manager for sustainable initiatives over there and cultural initiatives. तो मेरा काम ही ये है कि integrating environmental education, climate education in their schools across Beacon House. अब Beacon House क्या आपको पता है कोई 300 schools हैं. मैंने अब तक के साथ actually 2 climate educator trainings की हैं. So actually giving the skills to teachers to teach about climate. And we have trained about 14 teachers. I did this in partnership with IEI, एक non-profit organization है, हुंजा में वो काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने remote schools में बहुत develop किए हैं, curriculums develop किए हैं, तो उनके साथ मैं काम करती हूँ. Marvi Sumro is my partner actually. और हमने एक ट्रेनिंग की है, हमने through that reached about 900 students और उनके साथ हमने climate solution summit कराई थी जिसमें उन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालनी थी फॉर क्लाइमेट. और आई थिंक इट्स लोगों को ऐसे लगता है कि क्लाइमेट एजुकेशन मींस कि सिर्फ अवेयरनेस करनी है, ठीक है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट व्हाट क्लाइमेट एजुकेशन इज, दैट इज नॉट व्हाट एनवायरमेंटल एजुकेशन इज. इट इज एक्चुअली अ थियरी ऑफ एजुकेशन. और वो हम जो आप अभी बात कर रहे थे ना, अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग, we're actually making a move towards that now. And Beacon House में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है जिसमें हम ज़्यादा learner agency देना चाह रहे हैं कि जो student है आप उनको skills दें to deal with the challenges that come. फातिमा तो नहीं आ गई बीच में, I don't want to take away from her. Fatma आ गई है, लेकिन I think this is getting an interesting turn. And if Fatma, if you don't mind, it can be a chat between us three, and I'm perfectly fine with it. And if Fatma doesn't mind. Absolutely. Yeah, Fatma's okay with it. I'll ask Fatma to unmute herself. Sorry. Yeah, you can continue, please. Hi. Azal, you could continue. Is we she don't still mind. there? Yes, she is here. Hi, sorry, my also internet is acting up, so I've had to take my video down. उससे slow हो रहा Okay. था. Yeah, no problem. Azal, could you put the link of your initiative in the chat? I'm so interested in knowing more about it. Link of my initiative. How do I share? Would you like the Insta link? Yeah, LinkedIn. Do you have a website or something like that? Or Linktree or or LinkedIn is website best. भेज देती हूँ. Let me just. Sorry, Fatma, I don't want to take over your. No, absolutely not. Session I think the entire point of this is to do. You continue talking. नहीं, I think the entire point of this is to do this collaboratively. तो फायदा ही तभी जब collaborations हो, क्योंकि आप अपनी डेढ़ की मस्जिद अगर हर एक कोई बनाता रहेगा तो कोई फायदा नहीं है. Yeah, so while you were away, Fatma, Azal was बिल्कुल, because SDG में भी यही है ना. Yeah. Yeah. Go ahead. Yeah, so I was just trying Fatma. I was trying to help Fatma recall हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे. So Azal was introducing about her initiative, which I am sharing on a screen now. Can you see my screen? Abadtak. Yes. Yeah. Please, Azal, feel free to talk more about this, and because this seems really interesting. Oh, thank you. Yeah, it's just an environmental education organization. I'm trying to register it. It's still, and you know how things are in Pakistan, it takes forever. Through this, I've done the climate educator training. It's not mentioned here because it's in partnership with IEI, but you can find it in the environmental education section. I'm developing a curriculum that I'm thinking कि किसी तरीके हम अगर इसको embed कर दें within the, अब क्या कहते हैं, NCP कहते हैं, National Curriculum Pakistan. I think it's not. Yeah. NCC, National Curriculum Council. They have something which is so shoddy. I really hope that they're able to take something with you and like develop it, because वो लोग जो चीज कर रहे हैं वही है जो हम 100 साल से कर रहे हैं. So like really, what is the point? Exactly. They're just repeating themselves.
So yeah, the goal is to eventually do that, but I'm also developing like children's storybooks, compiling these stories together. हम oral history वगैरह की बात कर रहे थे, playing on those folk tales, things like that. So that's the idea. I'm hoping because like I said, environmental education is not just about creating awareness, it's about giving the students and teachers the skills they need to deal with these challenges. So it's like, okay, how do you make scientific observation? What makes a proper research question? How do I become a better citizen in the world? How can I be an agent of change? All of those theories come into play, and we want the students to come into the world acting as agents of change and not just as abstract observers. That's the whole point. So environmental education is to take their this initiative forward कि जी आप अगर सब कुछ बैठ के देखते रहेंगे तो obviously कुछ नहीं होगा. You can't leave the problems to a different body, a government body to do it. It's better that you just take the action yourself. And like Fatma was saying, one size does not fit all. Obviously, हमारा अपना context different है, हमारा Indus River का context different है. हम उसको किस तरह हमारे इतने traditional methods हैं, like irrigation, एक clay pot irrigation method है, which is it's a better way to irrigate your land versus flooding the field with water. You're already a water stressed nation. I can go on and on. And again, I don't want to take too much time away from Fatma as well. But yeah, this is just a little bit of my initiative. I'm hoping that we get more teacher trainings going and, give teachers the skills. And my experience is this, there's just such a lack of motivation by teachers. Kal I did a webinar with school heads, just establish a kitchen garden in your school and make that integrated with learning and teaching and, getting the kids involved. Usme itni holistic development hoti hai, how to give care, how to be patient, how to grow, how to, extend kindness and care to others. And obviously systems thinking, anticipatory thinking, इसमें सारा आ जाता है. लेकिन वो इतने रिलक्टेंट थे कि नहीं बहुत ज्यादा काम है और हम इसके लिए तो सेपरेट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा. And I was just like, this is exactly the problem. Exactly, it's exactly the problem. And it's like ये अगर private schools नहीं कर सकते जिनके पास इतने बड़े campuses हैं, and they honestly I feel like they just don't want to do this because they just don't want to do it. just make buildings on the little spare plots of land that they do have left. Exactly. It's just insane हमारे because अपने स्कूल में फातिमा, हमारे अपने स्कूल में उन्होंने ये किया है. अच्छा वाला ग्राउंड था हमारे पास, उन्होंने उसको भी कंक्रीट कर दिया है. Why are we making everything concrete? Like you are doing the exact opposite of what needs to be done. Opposite, 100%. Yeah. On that, I'm from Mehran University, और जब मैं पढ़ा करती थी, we had classrooms जिनकी छतें बहुत ऊपर होती थी और पंखे लगे होते थे. तो it was और rooms कुछ इस तरीके से बने थे कि naturally ventilated होते थे. हमें कभी भी क्लास के अंदर I can't recall कि मुझे शदीद गर्मी वाली feeling आई हो. I mean गर्मी, of course I lived in Jamshid. I mean my university was in Jamshid, तो गर्मी तो थी लेकिन कभी भी शदीद गर्मी वाला scene I never felt. लेकिन once I graduated and I started to teach at the same place, what they did, उन जो सारी जो ऊपर वाली छतें थी, so by default I'm like it's a very basic, आपकी आप ऊपर जितनी ऊपर छत होती है it helps you ventilation and तो उन्होंने छतें वो फॉल सीलिंग के साथ छतें और नीचे टाइल लगा के एंड और जो सारा विंडोज वगैरह थी सारी बंद कर दी एंड ट्रस्ट मी और पंखे हटा दिए. लाइक इन जामशोर उन्होंने पंखे हटा दिए इमेजिनिंग कि अब सिर्फ एयर कंडीशनर चलेंगे और मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में बिजली कब होती है. एंड इट गॉट सो सफोकेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग. सो जो एक अच्छी वाली चीज थी उसको खराब कर दिया. This has got to a very interesting turn. And Azal, if you are available, I request you to stay for 15 minutes more. And we have a lot of questions from audience, from you both. The common question is coming up for you both, that how can like the audience who is I think majority of audience is from like they're students at university or colleges and they are interested in knowing how can they help and like how can they participate in cool initiatives like these, and like especially in your, are there any internships opportunities? And like I think a good number of people are from Sindh, so I'm not sure how does this work. So do you have a reply on that? And it will be open for questions now. Fatma, you go. How can people work with you? Okay, so guys, honestly, I just came back this week, but yeah, क्या कहते हैं, I am already working on a curriculum
which I would want कि मैं उसको क्या कहते हैं उसको अच्छी तरह बना के I would want to implement it, and obviously you guys can be campus ambassadors, things like that. I'm still I'm still hashing this out, but I feel like I think Azal is a better starting point for volunteer work. But what we can do is we can sort of hook you up with other organizations which are doing similar work as well. Okay, so Azal organization is one thing. Then I know WWF अब इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा काम करना शुरू हो गया है. And yeah, one thing I really did want to mention, but I think I'll come back to that. I feel like पहले हम इस चीज के ऊपर ज्यादा discuss कर लें. So like if Azal Don't could just forget. no, don't worry about it. Yeah, Azal. Yeah, I do offer volunteer work and internship opportunities. I cannot pay because obviously it's currently we're not generating any income, but the goal is to eventually get there. If anybody's good with grant writing and helping research for grants, that would be really helpful. Can you guys see me, because I think I'm getting stuck. We can. But is this available for people from Sindh? Because those who are asking are from 100%. Everything is virtual. I work virtually. I propagate that also. I don't believe कि हमें office ज़रूरी है जाना. We don't need a building. When now the COVID has really enabled this for us. I have also, because I'm a bit of a micromanager, so I have organized it in a manner where everything can be done virtually. I use Asana, which is the software to do project management and things like that. So currently, I need like social media managers. I need somebody who can assist me with I have a book club, environmental book club as well. So अगर उसको मैं जरा physical form में लेके आना चाह रही हूँ, so I need someone who can support me in that as well. The thing about volunteering with me is it has to be a win-win situation for both of us. That's how I see it. So I don't want कि मैं किसी से extract करती रहूँ, उनको मुफ्त से उनसे काम करवाती रहूँ. If you need something from me, I'm there. I'm always available to help you develop your CV, to help you write. I can help write. Not even help. I can really assist you with college applications as well, and write you a recommendation. Let's say if you did really well with me as well. So I'm hoping that you benefit just as much as I do if you were to volunteer. But I need you to be on top of things also. ये नहीं कि बस सब आराम से क्योंकि volunteer work है तो take it easy type scene. So yes, that's the goal, at least, that we all have a beneficial relationship. Nevertheless, that's it from my end. If you guys have anything, or we can close it. All right then. Thank you so much, and bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye.